नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी वाणी में। एक बार फिर से हर रविवार की तरह हम आपके बीच मौजूद हैं, बेहद खास मेहमान के साथ। आज हम आपके साथ हैं। एक सुपर आर्टिस्ट हैं, पहाड़ से हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, मेरे पुराने दोस्त हैं। और वो जो मल्टीलिंगुअल रैपर छाए हुए हैं पहाड़ों में इस वक्त, मैं मिलाना चाहूंगा मेरे अजीज, मेरे चहीते फ्रेंड गौरव। वेलकम गौरव, Hey, पहाड़ी वाणी। hi, Pratik. How are you? Hey guys, what's up? I'm really so glad to be here. आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, good evening, and guys, I'm really happy to be here. I thank Pratik a lot to give me this opportunity to come with the ideas as to uh, there are a lot many things that I need to share and need to tell you guys as to what goes on beyond rapping and how this lifestyle, this journey took place. So thank you very much again, Pratik. गौरव, मैं आप सबको बता दूं, गौरव इज सौरभ धामी। सो फ्रॉम सौरभ धामी टू गौरव, सो इट टेक टू मेनी लॉन्ग इयर्स। तो मैं चाहूंगा कि आप गौरव सभी को वो जर्नी जो है, वो जर्नी का जो आप एक रूटीन रहता है, उस चीज को बताएं किस तरीके से फ्रॉम सौरभ धामी यू बिकेम गौरव। Sure, यार. So before this, मैं ये बताना चाहता हूँ that I've Pratik was my classmate before and he knew me very well. और growing from that area, so journey कहाँ से शुरू हुई? It started somewhere around when I was in my pre-teens, 12, 13 sort of age. मैं 6th, 7th में पढ़ता हूँ and then it all started. तो वहां से and it was not at all about हिंदी हिप हॉप एंड ऑल दैट. मुझे जो हिप हॉप मेरे पास एक्सेसिबल था वो है वेस्ट कोस्ट. और आई यूज्ड टू लिसन टू रैपर्स लाइक Lloyd Banks, Young Bucks, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, and all that stuff. So I've been my rap journey started from there, and it was, and the time was very crucial. Like us time pe we didn't have access to internet. We didn't have access to any other media as well. Phones to dur dur ki baat thi. Even internet was a rare commodity. We didn't had any clue as to what internet looks like on a phone. हमें बस साइबर कैफे का पता था एंड हमें लाइक वी डिडंट हैड एक्सेस टू इंटरनेट. तो ये जो एक टाइम गैप होता था, लाइक माय फेवरेट शो यूज्ड टू कम VH1 जो चैनल है जिसमें मे बी यू गाइज नो अबाउट इट, उसमें इंग्लिश सॉन्ग्स आते हैं. तो वहां पे ये एक एक शो आता था जो मॉर्निंग 5 to 5:30 चलता था एंड इवनिंग 6 to 6:30 चलता था. तो यहाँ पे इतने इस ड्यूरेशन में ही हमें आई हैड एक्सेस टू ऑल दीज इंटरनेशनल हिप हॉप एंड सीन. तो कमिंग फ्रॉम देयर रैप चलता रहा एंड ऑल दैट, आगे चलता रहा. बट और सौरभ धामी से गौरव कैसे बन गया, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम जक्षा जास्त्रे था. एवरी टाइम मैं ये चाहता, हाँ या, एवरी टाइम आई वांटेड कि इट शुड बी समथिंग यूनिक. माई नेम शुड बी समथिंग यूनिक, लाइक एक एक एसईओ के हिसाब से भी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया था. तो आई रियली वांटेड कि व्हेन एवर यूजर सर्च दिस आर्टिस्ट नेम, तो हमेशा उसको कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी में गूगल सर्च इंजन में दिखाए. एंड और उस तो आई केम अप विद Zaksha Zastre. तो द प्रॉब्लम वाज दैट पीपल wasn't really resonating with that name. उनको वो नेम साक्षात से बोल ही नहीं पाते थे. मैं एक बार उनको बताऊं वो समझ नहीं पाते थे. तो देन इवेंचुअली चलते चलते देन इट वाज लाइक आई केम विथ अ नेम Zaurav. सो Saurav and Zaurav, so Zaurav relates to Saurav. एंड तो कोई या, इसके पीछे की कोई कहानी, कोई एग्जैक्ट कोई इंसिडेंट, so that you can resemble in your name like from Saurabh to Zaurabh? कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इंस्पिरेशन, कुछ ऐसा रहा, ये और या. जस्ट इज लाइक और जस्ट फॉर एसईओ, और कुछ इंस्पिरेशन थी और सम मीनिंग इन सम अदर लैंग्वेज, कुछ इस तरह का कोइंसिडेंस रहा है नाम के साथ? राइट. सो स्टार्ट हुआ
and I wanted, so I started rapping. I used to write raps. I used to write songs. I used to write raps. I used to do rapping all the way every day. But यही था कि इसको commercialize कैसे? Like I didn't had any clue. Like इसको, because we didn't had access to internet, we didn't had access to YouTube that at that point of time. तो ये तो एक बहुत ज्यादा हमारे पास, like you know, I wish उस टाइम हमारे पास YouTube होता तो I would have been like really far off from now, but still I'm doing my level best. But लेकिन ये story ऐसी थी कि Zorav, uh, I really, जब मैंने अपना म्यूजिक करना शुरू किया, and then when I came to YouTube, it was just 2016 2017 18 when I came to YouTube. And Zorav, uh, so I had to come up with some name. So I really searched, what was the name of Drake? What's the original name of Drake? What's the original name of Snoop Dogg? आपका like Dr. Dre का असली नाम क्या है? And I came to know that इन सब में से किसी के भी असली नाम नहीं रहते रैपर्स के. किसी का नाम अरमांडो क्रिश्चियन पेरे है. So Pitbull is one of my favorite rappers. So उसका नाम अरमांडो क्रिश्चियन पेरे है. So I was like Armando Christian Pere and Pitbull, and then Snoop Dogg ka naam is something else, and he's mentioned Snoop Dogg. Drake is something else, and then Travis Scott and all these people. These guys do not have their actual names. इनके stage names थे. So that's when I came कि I really want a stage name, but what should it be? तो मेरी priority हमेशा से यही थी that it should be unique, but I really wanted that it should be relatable as well. So Zaksha Zastre was a unique name, but I couldn't come up. But it was really not relatable. People cannot relate. So, and yeah, the relation that I wanted people to see in my name is that because I am a multilingual rapper, I rap in Spanish, Russian, German, and Nepali, and Punjabi, and Hindi, and English, and you give me the name, and I am rapping in that language. So that's when I say myself a multilingual rapper. So Zaksha Zastre name really comes from a Mongolian name. It's a Mongolian language name. But really, if you really search Zaksha Zastre, you wouldn't find even a single person in the entire world. तो मैं मल्टीलिंगुअल को अपने माइंड में लेके चल रहा था. मैं I was taking uniqueness in my name into consideration as well. But then finally I was like, I did come up with Zaksha Zastre, but it didn't really last long because people couldn't relate. वो Mongolian language से था जरूर, but people couldn't relate that. So then I came up with the name as Zorav. So Zorav relates to Saurav and Zorav, like Saurav is my name and Zorav. Plus, it's also a very unique name. I really want all of you guys, all of you, upcoming rappers and lyricists or hip hoppers, if you really want a name of yourself, so this is really an added advantage. Just come up with a name which is really unique, and so this is really gonna be a lot of help to you. So कोई भी नया बंदा यूएस में, रशिया में और स्पेन में और मे बी इंडिया, मुंबई में आपको जब सर्च करता है, for example, he comes across your song और उसको पता चला there's a guy named Zorav. So बंदा उसी वक्त like he'll start searching. Once he searches, तो आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि it should come at the top of the Google. तो वहां से आपको instant accessibility मिल गई, which really proves a lot of, it really keeps you very, very far up from the competitors. So ये मेरी जो जैसा कि पिथौरागढ़ से रहने वाले हो, तो किस तरीके से पिथौरागढ़ से लेके ऐसी ये जो सोच है, एक जो माइंडसेट है टू बिकम अ मल्टीलिंगुअल रैपर, कितना मुश्किल ये इनिशियल स्टेज पे रहा, और जो ये मुकाम है इसको हासिल करने में कितनी मैं कहूँगा तकलीफ है और मुश्किल भरा जो ये पूरी जर्नी थी अब तक की, उसको एक छोटे एक फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय to such a dream which is usually used to considered as a people who are living in a metropolitan city, कितना अलग था, कितना मुश्किल था. और जो मैं स्ट्रगल की जो बात कर रहा हूँ वो भी 10 साल पुराने, आपका वो दौर नहीं है, वो 10 साल पुराना दौर. Really? Please tell me about that. Yeah, definitely, bro. And you have been through that era as well, so you will really, like, guys from our era will really
resonate with me. तो होता क्या था, it all began somewhere around 2000 2006 2005 2004, like really back then, like 2005 6 ऐसे time में शुरू हुआ था ये. And then I was into rapping, और तो start कैसे हुआ, that there was a lot there are a lot of songs that were famous, that became really famous at that time, and I Wanna Love You really became famous at that time. So I really was these, मैं इन सब raps को करता था. I really used to catch up very well, and I really used to, like, I used to rap it. So I used to rap in front of the classmates, in front of friends, in tuitions. जब भी हम ट्यूशन पे थे, तो रोड साइड में, because even other guys were fascinated with this, because this was something that was really coming up, but then there were not many people who could do that. So I was really fascinated about this, and I was like, okay, like, why shouldn't I write my own stuff? Why shouldn't I do it? So it started with rapping other songs, and soon after that it was like, if they can do it, why can't I? Like, even I can go ahead and write it. So सफर वहां से शुरू हुआ लिखने से, and then I started performing, like very small performances, like मैं parks में, or maybe like playgrounds में, मेरे across मेरे friends और maybe छोटे जो मुझसे छोटे students थे, वो हम लोग gather हो जाते थे, and then and I used to rap, and everyone was like, bro, how are you able to do that, and how are you able to write that and all that stuff. तो it and appreciation बहुत मिला, and बहुत बार मजाक भी बनी है, because coming from the small town, as you mentioned, I remember an incident when when me and there were like like 7 or 8 guys who I still know, and they like I still remember their faces there. तो ये लोग इन्होंने कहा, like, चलो सौरभ, like, let's, like, I have okay, so these people were like, आप you rap, so we have heard that you rap, can you go ahead and show us something? I was really fascinated, I was like really happy, and I started rapping, and I did, like, Chameleonaire Hip Hop Police is the song name that's from Chameleonaire rapper. So I did that, which was way too, like, no one else was doing something like that. So I did that, and these sort of guys, they started, at the end of my rapping, these guys started laughing, and I was like, I was cynical about it. I was like, ये क्या हुआ हो रहा है, like, I was like, really, they motivated me at start, and then they are doing this, and then मुझे बाद में पता चला that they are, like, they, bully kind of a bully they were doing, I think. exactly bully exactly वो भी, मतलब उस चीज को भी हमने फेस किया है at that time, face किया है. when rapping was not known to everyone. Yeah. So uh, yeah, but मैं I was kind of a hefty guy, so they didn't really wanted to mess up with me, but really वो मजाक बना रहे थे. I really came to know वो मजाक बना रहे थे, and I really felt bad, because that time the maturity level was not that much, and I really felt it, that why these guys are doing that. And ऐसे भी instances देखे, and but I really want to say to you guys that today, it was just 1 month back that 3 of those guys asked me, that they complimented me as well. I said, thank you very much, bro, and I really appreciate that you are listening to my song. And they had also asked me to, if they can, if they are, if I can collaborate with them, or give them a screen time on my like in my song. And I was like, I'm you're more than welcome for that. Like, please go ahead and, like, let me know, ping me, call me, I'll be there. तो एंड देन वहां से फिर क्लासरूम परफॉर्मेंसेस शुरू हुई, क्लासरूम परफॉर्मेंसेस फेयरवेल्स में, एंड देन लाइक 11th and 12th में आई रियली यूज्ड टू रैप अ लॉट, लाइक वी स्टार्टेड रैपिंग, और फिर मुझे मेरे कुछ गाइज भी मिल गए थे, लाइक कुछ लोग भी मिल गए थे. बट द मेन पार्ट वाज दैट, प्रतीक, दैट इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, यूट्यूब वाज नॉट देयर. आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एक like 15 seconds का reels है, 30 seconds का reels है, and you have got massive audience there. बहुत ज्यादा रिसोर्स है, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है, तो इट बिकम इजी नाउ टू एक्सप्लोर, राइट. पर वो दौर अलग था उस वक्त.
रिसोर्सेज की भारी कमी होती थी, और वहाँ Right. पे आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, देन सर्टेनली बहुत बड़ा इशू था। जरा मैं एक बात कहूंगा, जो लेवल है, मैंने म्यूजिक देखा, और ये सब इस चीज से वास्ता रखते होंगे कि म्यूजिक आप बना रहे हो, जो लेवल ऑफ म्यूजिक है जिसमें स्पेनिश है, इंग्लिश है, तो Right. ये आइडिया जो है, ये रैपिंग बहुत तरीके की होती है, बट स्पेसिफिकली इस आइडिया पे वो काम करना, ऐसा ऐसा मतलब किस तरीके से ये सोच कब डेवलप हुई और ये कब जनरेट? Right. So, like, it is a very vast field actually. You really have to be very much concentrated कि आपको किस जगह पे जाना है. Are you a Hindi rapper? Are you a English rapper? Are you a Spanish rapper? Are you into love rapping? Are you into intense rapping? तो बहुत सारी चीजें हैं. But I grew up listening to all those stuffs. मैं Eminem को भी सुनता हूँ जो aggressive है. I used to listen to Akon as well, जो कि बहुत romantic genre में आ जाता है. So I used to listen to each and every one of them. But मेरी specialty being that I really loved different languages. I really मैं like it's not now that I'm rapping Spanish. It's not now that I'm rapping Russian. It was back then when I was in sixth and seventh. I was into Daddy Yankee. Like most of the rappers would know about him. He's a Spanish rapper. So Gasolina was the song that came. Gasolina Daddy Yankee. So I really used to verse as well. So मैं verse करता था like Unito mamo pakri cara prenda lomo toy. Zumale mamo pakri cara prenda lomo toy. Zumale mamo pakri cara prenda lomo toy. Jisene mamo pakne nane pakne leg duro. Mami yo te kene nuele na sira duro. So ये मैं I'm या talking this about the time जब मेरे पास ना YouTube है ना फोन है, there's nothing there. But वो जो टीवी का एक्सेस है, बस हम वहां से सुन पा रहे हैं. एंड देयर वर few of our friends जिनके पास phones थे and CDs थी, wherein जहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सॉन्ग्स थे. तो बिल्कुल। वहां से इज आई रियल तो वहां पे मेरा एक ना देयर वाज वन क्यूरियोसिटी जगी दिमाग में दैट मैं इंग्लिश ही सुनता था एंड हिंदी ही सुनता था, बट across the world people are creating music in these many languages. So then I was like, bro, I really want to explore this. No matter मुझे उस सीडी और कैसेट और डीवीडी और MP3 के लिए कहीं भी भागना पड़े, मैं जाऊंगा एंड आई विल डाउनलोड दैट. आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस. तो जो ये मल्टीलिंगुअल जो ये मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, it was all because of this multilingual songs that I was going through. I'm going to Russian as well, and then I'm listening to Arabic as well. I'm listening to like Spanish. I already told English, and English maybe you have got different accents, like temperature from Sean Paul. There's this song which is "Wake on the way that time call. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature." So every one of them were singing wrong lyrics for that, and I was like, what is that now? तो जब मुझे पता चला कि Jamaican accent भी something which people really aspire for and are really fan of it as well. तो ये जो multilingual environment है, वो इस चीज ने मुझे इस multilingual environment के लिए mold किया. तो जरा मैं फंबल, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि जो रैपिंग है वो फंबल ऑफ वर्ड्स है, बट देर इज लॉट मोर देन दैट, राइट? आपको सही एसेंट, सही प्रोनाउंसिएशन और काफी चीजों की एक कोलैबोरेशन है. तो जैसे कि अभी गा रहे थे, एंड यू टोल्ड अबाउट दैट इट्स नॉट जस्ट यू कैन सिंग एनीथिंग, राइट? यू नीड टू बी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, राइट? तो उसमें वो जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो सोचते हैं कि फंबलिंग है और बहुत फास्ट किसी चीज को गाने को रैप बोल लिया है, तो ये कितना ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियर करें, और उसको थोड़ा सा बाय सिंगिंग योर सॉन्ग, any of your song, I want to clarify it and distinguish it between saying anything in speedy or rapping. Sure. So, Pratik, very nice question. And most of people are like, and there are fumble rappers as well. बहुत सारे वहां पे फंबल रैपर्स हैं, जो कि पता है फंबल रैपिंग इज समथिंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल फंबल रैपिंग क्या है? फंबल रैपिंग इज समथिंग दैट यू आर नॉट क्लियरली
you're not clearly pronouncing that word. So so for example एक song होना चाहिए like it goes something like, और उसको अगर अच्छे से रैप करें तो it goes something like this: you get the bag and fumble it, I get the bag and triple and tumble it, shredded the law 300 cash and the car came with the blunt in it. तो ये clearly रैप करना हुआ, but many of people वो कैसे करते हैं, you get the bag and fumble it, I get the bag the flip and the thumb it, love in the can, the rub in the nails, the one like a nap in the bum. So you are just opening your mouth for the sound. You're not clearly versing that complete word or that sentence. So that is fumble rapping. So many of fumble rapping भी चलन में है, and then normal rapping भी चलन में है, but fumble rappers are usually people consider good rapper as the one who really are into very deep and meaningful lyrical writing. So जैसा कि पता है तुमने बोला that अच्छा, before coming to my song there are lot many people listening to us जिनको कि इस song के बारे में पता होगा, which is मैं था तेरे नाल नचड़ा. I'm really sure lot of you guys would have listened to it. Jay Sean is an NRI. He usually does English, but also does some bit of Hindi. So he came up with his very first song, which was very first album. In that album, this was the part of that album. So the song is "मैं था तेरे नाल नचड़ा." So इसमें so it goes something like this. Like, girl, you got exactly what I need, and you're gonna love it, choose where I wanna be. Caught up in the club, the finest girl I see, and know that you wanna come up with you and talk. I'm just trying to keep it real with you. Are you feeling that way? I'm feeling you. Either cool or chroma crew. Cause Jay rich and jagi dia coming true. Kuri soni, te akke mastani, to kite adi rani ni gale sone ja. ਉਹ ਦਿਲ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ so ये तो है अब इस गाने में there's a part wherein Jay Sean comes up with a rapping which is another form of rapping which I really like and it's really close to my heart, which is compulsive rapping. So compulsive rapping तो rap तो होता कैसे, तो the sentence is, girl, whatever I have told you, I have been thinking one of the possible lyrical ways to come and approach you. So अब इस जो compulsive rapping है वो कैसे होगी? So it goes like this: girl, I whatever told you, been thinking of one of the possible lyrical ways to come and approach you. Have I been able to think about anything wanna not reach ya? I ain't trying to speak ya, I ain't trying to use any lyrics to impress ya. So you are really breaking down those words out there. So this is a very beautiful form of rapping. There are not many people who can do that. It's really rare. But so this was one of the rapping. So it is, you are in a speed as well, but then you are clearly versing out the words as well. So one thing is one thing is clearly versing out those words. You do not have to fumble it. Like, dude, give us the meaning of that name. Give us the exact meaning. Give us, pronounce it clearly. So that's when you will be called an awesome rapper. And and the second thing is, one thing is this, and second most prominent thing is lyrics. Lyrics should be like really close to your, like, a song will be a hit when it really comes from inside you. If you are imitating someone, then bro, like, you are in a very bad zone. I'm not sure कि कैसा जाने वाला है song and all that, but then if you have really written it with all your heart and soul, and it's something that relates to you, that is very original, right? जो बिल्कुल एकदम core है, जो raw है, that will go right. Yeah, exactly. For every artist, for every creator, something which is original, that will appreciable, right? Yeah, so, you do not, तुम copy मत करो, be yourself, give your originality, क्योंकि as you have already heard, right, कि अगर copy करोगे तो सब लोगों ने ले लिया है. Uniqueness is only you. तुम ही एक हो जो unique हो, बाकी everything is already been taken away. Yeah. तो एसेंट पे हम थोड़ी बात करेंगे, because for
if you are rapping in 2 or 3 languages, so how important is to catch that accent, right? For every right, language accent is very important. हर किसी का एक right. अलग अपना एक, तहजीब होती है बोलने की। तो कितना Yeah. मुश्किल यहाँ पे एसेंट का कितना बड़ा रोल है व्हेन यू आर अ मल्टीलिंगुअल रैपर और अ मल्टीलिंगुअल सॉन्ग राइटर? It's very important to to maintain that accent in whatever language you're doing that. So say for example, you are into Spanish rapping, and then you have an accent which is a Hindi accent, like तुम्हारा हिंदी वाला like proper Hindi accent है. So what I would suggest before saying anything, what I would suggest is, like, if you are really into that, go ahead for that. But if you're really not into it, and you really know that your accent is something which is totally meant for Hindi, go ahead with Hindi, bro. Hindi karo and give it out your best. But don't try to imitate. Like, what you're doing is, you तुम्हारा अंदर से कभी पैशन नहीं था इंग्लिश के लिए. यू हैवंट यू हैवंट लिसन टू एनी ऑफ दोज रैपर्स आउट देयर, और तुम अचानक चले गए इसलिए बिकॉज यू रियली वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि दिस इज अ गाय दैट जो कि ये सब करता है. दैट रियली वोंट वर्क, क्योंकि तुम अपना, बिकॉज दैट्स नॉट रियली यू. तुम जो बचपन से करते आ रहे हो वो ही अगर तुमने अचानक से अपने आप को चेंज कर दिया, देन इट्स रियली नॉट गोना हिट टू द ऑडियंस. जो तुम ओरिजिनली अंदर से हो, एंड जो तुम द थिंग दैट यू हैव बीन डूइंग. तुम हिंदी में लिखते रहते थे, तुम इंग्लिश में लिखते रहते थे, तुम स्पेनियल में लिखते रहते थे. दैट्स व्हेन you should really go for that. Talking about me, मैं I have all, the main part that I would like to tell the audience is that मैं इंग्लिश में सोचता हूँ. मैं हमेशा इंग्लिश में सोचता हूँ, एंड देन आई पेन डाउन द लिरिक्स. तो इट रियली बिकम्स इजी. इंग्लिश कम्स एज अ रियली इजी पार्ट टू मी कंपेयर टू हिंदी. आई डू रैपिंग इन हिंदी एज वेल. मैंने वंदे मातरम अपना हिंदी में लिखा था, and I came up with very beautiful lines as well. तो हिंदी में the lines were, माँ तुझसे दूर निकल. So first of all, this was for on the account of 15th of August. मैंने A.R. रहमान का वंदे मातरम को रैप में कन्वर्ट किया था. तो it goes something like this. माँ तुझसे दूर निकल, अपनी मंजिल पाने चला आया था. भ्रम ऐसा ये, लक्ष्य पास तू पर दूर निकल आया था. शुरुआत तेरा साथ में लाया था, परिस्थितियां साथ तेरा साया था. याद मुझे मेरा वचन तुझसे, जीजाबाई को वचन जो शिवाजी ने दिलाया था. निडर हरदम सत्यता का वो पाठ जो तूने सिखाया था. हाथ पकड़ वंदे मातरम गान जो तूने गवाया था. परदेश में याद तू आया था, सब साथ पर अकेला खुद को पाया था. यहाँ वहां सारा जहां घुमा मैं, पर तेरे जैसा माँ कोई नहीं मिल पाया था. एंड देन इट्स मैं गया जहां भी. तो ये मैंने, वो तो मैं गया जहां भी, इट स्टार्टेड, इट वेंट ऑन, बट दिस वाज द पार्ट दैट आई एडेड. एंड so what I'm trying to say is, I write in Hindi as well, but English is something that comes, that is something that comes really as a, मतलब मैं सोचता ही इंग्लिश में. That is something that I wanted to say. और Spanish is something which I really love. I have been doing Spanish songs since, जैसे कि मैंने बताया कि like 6th 7th class से I started Spanish. तो आई वुड लाइक टू लिसन दैट लेटेस्ट वन. मैं चाहूंगा ऑडियंस भी वो लेटेस्ट को सुने दैट यू हैव क्रिएटेड एंड रिसेंटली पोस्टेड ऑन योर यूट्यूब. तो उसको एक बार थोड़ा सा आई वांट टू इवन ऑडियंस ऑन. या सो प्रतीक, मेरा लेटेस्ट सॉन्ग चला 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 है, एंड मैं ऑडियंस को चला 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 के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, एंड देन आई डू द वर्सिंग. तो चला 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 का कॉन्सेप्ट मैं क्या लेके आया हूँ, दैट I have tweaked. I am writing something which I guess which no one has done any time in the world. तो मैं क्या कर रहा हूँ? I am trying to devise my own language. चला 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 जो song है, it's written in my own language, which is a tweak of Spanish, which is a tweak of English, which is a tweak of Hindi, which is a tweak of Russian, and it's a mixture of every language. So this is something that I'm trying. ये एक experiment है, and मुझे पता था that चला 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 अगर आएगा भी, that there are lot many questions that are going to come up to me कि भाई क्या language है, क्या करना चाह रहे हो and all that.
I'm really thankful to you that you came up with this question, क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिंग राइटिंग इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस. आपके पास पैशन है, यस आप लिख रहे हैं, बट कोई भी चीज आप ऐसे ही नहीं लिख देते. you you want a lot of you need to put in a lot of efforts out there. अब आप उसमें भी आप मान लीजिए आपने आपने रैपिंग किया और आप नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी लिख रहे थे, उसमें भी आप हिंदी और इंग्लिश का, स्पेनिश और रशियन का ट्वीक करके आप कुछ एक लैंग्वेज बना रहे हो, एंड देन उस लैंग्वेज को बनाने के बाद आप उसमें लिरिक्स लिख रहे हो, एंड दैट लिरिक्स हैज अ मीनिंग एज वेल. तो दैट इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग, बट आई रियली लव इट. लाइक आई कैन गिव माई होल लाइफ टू डू दिस. तो वो इतना सही लगता है. तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल ऑडियंस नाउ. सो जैसा मैंने बोला, गाने का नाम है चला चला चला, विच मीन्स कलर्स कलर्स कलर्स. तो ये गाना मैंने होली में निकाला था. I would really request all you guys to go ahead to my YouTube and listen to this. And जो मैंने आपसे बोला कि जो मैंने lyrics का tweak किया है, and then I'm trying to come up with a different language altogether, वो आप उसमें देखो, and then please comment on the video. आपको जैसा भी लगे, if it's good, please go ahead. If it's bad, please go ahead. Like just give your comments. That it really means a lot to me. And please, if you like it, please share it as well and subscribe as well. So the song name is Chala Chala Chala, means colors colors colors. ये मैंने होली में निकाला था, and the song goes something like this. Yeah, so yeah, so it goes like this. Yeah, washamalak no fella, hey woman okay na zera, hey wekero wella na piera, no shield no shot mozzella, hey trying to sit here but no laje. Tryna jona pela granja, tryna shitia bushnolaje, tryna jona pela ke, tryna radena shitare, litchipil share, performana salienta bienne, saite de plejemela ne preponesh, chala chala chala. So this was the first verse of Chala Chala Chala. So and listen to the complete song. Shout out to my music composer Gaurav for giving an amazing music on this. Shout out to Mr. Chand for styling me up on this. I really want to give a shout out to everyone who has helped me here. Is city mein rehkar, and these all those people are giving they are giving their 100% for my project. Like so I really want to thank all of them. Karthik Joshi is one of the very best in cinematography. He has helped me a lot. Shout out to Hills and Trails, Abhijit and Manish. They are doing a really awesome job. And a shout out to Puneet Shinoy. सर कितना पोटेंशियल पहाड़ हमने बोला, जैसे छोटा शहर, स्मॉल टाउन बीइंग पिथौरागढ़, एंड हाउ मच पोटेंशियल इज देयर. लोगों में कितना जोश है, कितना काम करने के लिए कितना एक्साइटमेंट रहता है. इतने सारे नाम लिए, डेफिनेटली इट इज अ टीम वर्क. तो किस तरीके से इफ आई टॉक अबाउट पिथौरागढ़ एग्जैक्टली, और आई टॉक अबाउट रिमोट एरिया और पहाड़ का कोई भी एरिया, तो कितना पोटेंशियल देख रहे हैं कि फॉर फ्यूचर समथिंग टू क्रिएट वेरी यूनिक, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? There's an immense potential, bro. Like there is so much of talent. मैं जब यहाँ पे I really like, मैं बैंगलोर में हूँ वैसे. I am in like मैं बैंगलोर में रहता हूँ, but ये लॉकडाउन के उससे मैं यहाँ पे हूँ, and then I'm doing all that. तो then जब मैं यहाँ पे आया, then I came to know about the guys who are into rapping and all that. I came across their lyrics. I came across the dancing style. Every guy, like there is so much immense talent out there in the city. But the thing is, एक बहुत ही prominent चीज है जो कि लोग नहीं कर पाते हैं, is they cannot continue because they do not have monetary support. Exactly, stability. मैं उसी पे मैं क्वेश्चन करने वाला था, because you are an engineer, right? You work and this is something that you are passionate about. But most of the people have that issue of stability. They don't have an income source. So how can they fulfill their dreams or desire? तो ये बहुत बड़ा इशू है पहाड़ के लिए. और इनफैक्ट जो स्मॉल टाउन बॉयज हैं, they have lots of potential, but the big thing is about money. So where to arrange, how to arrange. So before that they need to get a stable job.
तो इस पॉइंट पे कितना कितना फोकस रहता है फॉर क्रिएटिंग एनीथिंग, इफ यू आर आर्टिस्ट और यू आर डूइंग समथिंग ऑन क्रिएटिव बेसिस, स्टेबिलिटी कितना बड़ा रोल ये सौरभ एज ए इंजीनियर, प्लीज टेल द ऑडियंस। श्योर श्योर श्योर। सो प्रतीक, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है, ये एक जो क्वेश्चन तुमने पूछा है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू टू बेसिकली मैं बोलूंगा तो करना चाहिए पेरेंट्स से। वी रियली नॉट नीड टू टॉक टू पेरेंट्स ऑन दिस। तो होता क्या है दैट आपके पास मॉनिटरी हेल्प अगर नहीं है ना, यू आजकल लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आजकल का टाइम ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप जितने जल्दी स्टार्ट करो आपके लिए उतना अच्छा है। गेट देयर इन द मार्केट एज सून एज पॉसिबल। आपके पास आज फोन है, आप फोन से रिकॉर्डिंग करो, बट बी देयर। इंस्टाग्राम में रहो, यूट्यूब में रहो। आपके पास आपके पास एक फोन है दैट कैन डू वंडर्स एज वेल। बट एक पॉइंट के बाद आपको यू रियली नीड मॉनिटरी हेल्प एज वेल। तो यहाँ पे तो फैमिलीज का एक माइंडसेट क्या है, person will get a job, will get a good salary, will get married, will get their offsprings, children, बच्चे हो जाएंगे and all that, and that's the lifestyle which is going on. इससे 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 बढ़ के तो पेरेंट्स कभी सोचते ही नहीं, और अगर सोचते हैं तो वो डरते हैं, दे फेयर अबाउट दैट। वो एक बहुत फेयर का जो फिनोमिना है ना, दैट इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। लाइक अगर आप इतना फेयरफुल हो एंड यू वांट योर चाइल्ड टू कि वो एजुकेशन ही करे एंड देन ट्रेडिशनल रूट से इंजीनियर ही जाए एंड देन डॉक्टर ही बने एंड देन लॉयर ही बने, so that's not gonna help. What's gonna help is a proper you should be talking to your kids कि क्या है भाई, लाइक एंड और ऐसा है नहीं, पेरेंट्स को पहले ही पता चल जाता है दैट व्हाट इज ही और शी इंटरेस्टेड इन। क्योंकि वो बंदा डांसिंग करने लगेगा, रैपिंग करने लगेगा। मैं अपनी बात बोलूं तो आई स्टार्टेड राइटिंग, रैपिंग एंड ऑल दैट। बट होता क्या है कि पेरेंट्स अपने they give education to their children and वो higher education, higher studies के लिए जाते हैं, and there's whole and soul thing जो उस बच्चे के ऊपर बात बोली जा रही है, that is you have to be stable, you have to be अगर तुम्हारे पास अगर like you have to be like stable और शादी करो and then you are good to go, but then ऐसा नहीं है। So one thing is, आप सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि पेरेंट्स से आई humbly request कि talk to your kids, and if they are really good into it and उनको वो करना है ना, that is something जो उनका फील्ड है जिसमें उनको जाना चाहिए। और अगर जाना चाहिए तो you support them monetarily, because वो उस टाइम पे monetarily नहीं सपोर्ट कर सकते, आपको वहां पे देखना है। After a while they'll be looking after their own needs, but abhi starting mein please give them a support as well कि भाई मैं हूँ, just go ahead and do that. But as far as the stability is concerned, you really need money as well. आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पेरेंट्स से कुछ मनी ले लिया एंड देन यू वर लाइक ओके, मैंने म्यूजिक रिकॉर्डिंग कर लिया, मैंने लाइक आई डिड म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा हो गया 10-20K में मेरा काम बन गया, नाउ आई नीड टू रिकॉर्ड अ वीडियो। आपने वीडियो के लिए भी यू समहाउ यू अरेंज्ड मनी एंड यू आर गुड टू गो, वीडियो भी कर दिया, डन। तो गाइज मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा दैट दिस इज नॉट रियली इट। आपने वीडियो कर दी, यूट्यूब में चले गई, ऑल दैट इज डन। इसके आगे आजकल एवरी सेकेंड पीपल आर पुटिंग आउट कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। your video is really hidden inside, underneath somewhere बहुत सारे videos. You really need money for advertising. You need money for going ahead and collaborate to come up with new videos. आपने एक वीडियो कर ली, आपका बजट था, आपने एक वीडियो कर ली, ठीक है। अब सेकंड वीडियो आप ऐसा तो है नहीं आप 6 महीने बाद वीडियो करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑडियंस के सामने एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू कीप प्रोड्यूसिंग कंटेंट, you have to give them content in a week,
मे बी इन 15 days, अगर आप वीडियो सॉन्ग करते हो तो 20 days, बट यू हैव टू कीप डूइंग दैट, बिकॉज अगर आप वो नहीं कर सकते तो देन यू आर रियली हिडन, और अगर आप छुप जाते हैं ऑडियंस से, देन दे वोंट कम बैक टू यू. तो one thing which I really want to tell you guys is that अपने आप को स्टेबिलिटी, एक इनकम सोर्स आप रखिए. एंड प्लीज डोंट अगर आप इनकम सोर्स अगर आपके पास है, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स देन. तो तुम अपना खुद का यू कैन कीप गिविंग आउट कंटेंट, बट गिविंग आउट कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कंटेंट को देने की. ऐसा मत करिए कि एक कंटेंट किया. और प्रतीक, मेरे साथ के देयर आर लॉट मेनी रैपर्स आउट हियर हु आर डूइंग दिस. उनको उनको एक बार के लिए दे कैन ब्रिंग मनी, एंड देन दे कैन, उन्होंने वीडियो कर लिया एंड एवरीथिंग इज डन. बट देन उसके बाद उनको लगता है यार मार्केटिंग के लिए आई डू नॉट हैव मनी, यार नेक्स्ट वीडियो के लिए आई डू नॉट हैव मनी. एंड देन वो लोग 4 months 3 months 4 months 5 months वेट करने के बाद दे कम अप विद अ न्यू कंटेंट. एंड तो उन्होंने तो पूरा ट्रैक खो दिया. तो ऐसे यू वोंट ग्रो गाइज. एंड और आपको क्या लगता है कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एंड ऑल दैट, दीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज, you guys have to pay a lot of money to be in these streaming services. आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल एवरी टाइम. देखो ना, एक वन सिंपल थिंग है, आप जब ऑडियंस के सामने दिखोगे ही नहीं, तो ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि आप एक अच्छे रैपर, सिंगर, राइटर हो या नहीं. उसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन में दिखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस होना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखना. राइट. तो फॉर दैट यू रियली नीड दैट मॉनिटरी थिंग. तो मेक श्योर दैट there's some income source coming in, और आप रुके नहीं है, आप अग्रसर हैं, आप रुके नहीं हुए हैं, आप कंटेंट प्रोड्यूस करवाते रह रहे हैं. या मैं एंड ऑफ द शो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू. तो मैं लास्ट टाइम में ये कुछ क्वेश्चंस में है कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इन विच लैंग्वेज, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्या इसमें पॉजिटिव और क्या इसमें बेहतर और आगे प्लान्स हैं, कुछ ऑडियंस जानना. Sure. So, guys, lot many projects are coming up. जो मैंने आपको बताया, चला चला चला, मैंने अभी आपको एक गाना सुनाया था. उस सॉन्ग में ही, उस लैंग्वेज में ही आई एम कमिंग अप विद वेरी ऑसम ट्रैक्स. समर ट्रैक्स आने वाले हैं. योर पूरा दैट समर वाइब्स ऑफ गोइंग टू बीच एंड enjoying, partying and all that. वो जो एक वाइब है, समर वाइब्स के सॉन्ग आने वाले हैं. You guys are really gonna love it. Fashion is one of the very important aspect of that. You will be looking me into very different, in a very different fashion. So the video is gonna be really awesome. Lot many songs are coming up in that language. Secondly, my very first international collaboration is coming up. There's this artist from Canada, Jeff Shana. So I have already written a rap over his music. He will be the singer, I'll be the rapper. So that will be my very first collaboration. Shout out to my brother Jeff Shana. Thank you very much for giving me this opportunity, bro. And so these are the tracks that are coming up, that are lined up. और आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त में बहुत सारे ट्रैक्स मिलने वाले हैं. समर वाइब्स आपकी बहुत फाड़ू होने वाली है. जस्ट स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ब्रो. Zaurab, मैं एक चीज और, फॉर द न्यू कमर्स, राइट, देयर इज अ होप सर्टेन, दे आर सीइंग अ होप विद इन यू, राइट. तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग, इफ समवन वांट टू लर्न, समवन वांट टू वर्क विद यू, तो वो ऑडियंस जानना चाहेगी कि उनके लिए क्या एक आपके तरफ से क्या ही सरप्राइज. Sure, guys, really, I would be so, I'll be so happy if you can come up to me for anything. आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम, you can contact me over Instagram, you can contact me over YouTube. YouTube में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. I read each and every comment. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, आप मुझे फेसबुक पे डीएम करिए. गो अहेड एंड आपको अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, I am there. I'm totally there to help you guys. आपको लिरिक्स से रिलेटेड हेल्प चाहिए, I am totally there to help you guys. कोलैबोरेट करना चाहते हैं, I'll be so thankful. Please come ahead and I really want to do something very magical with you guys.
तो जितने लोग हैं, कोई भी आइडिया है, गर्ल बॉय, छोटा बच्चा, एंड देन बड़े, मुझसे बड़े, कोई भी है, जस्ट कम, जस्ट गिव मी अ पिंग एंड आई विल बी देयर एट योर डिस्पोजल. एंड बहुत ऑसम चीजें निकल के आती हैं व्हेन यू हैव अ वेरी गुड टीम. Puneet Shenoy is one of my music composer, music producer, and he's doing a very awesome job. मुझे वो ऐसे ही मिला था. और मैं खुद जितने म्यूजिक मैंने आज तक क्रिएट करे हैं, इट्स ऑल कोलैबोरेशन. मैं खुद लोगों के इंस्टाग्राम में डीएम किया था, फेसबुक में डीएम हुआ था, एंड देन पीपल रीच्ड आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम. तो ऐसे ही कोलैबोरेशंस आगे बढ़ते हैं, एंड देन यू गेट सक्सेस. तो टीम वर्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो नहीं है तो कुछ नहीं है. मेरी from my very first track Choices, from my second track Throwback, from my third track Do You Feel It, from my fourth track Chala Chala Chala, there जितने भी लोग मेरे पास थे, they were so helpful, and उनके कोलैबोरेशन के ही वजह से I was able to do all those stuff. आपका तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग Throwback, तो it's really close to my heart as well. एंड ऑफ द शो मैं थ्रोबैक जरूर सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को मैसेज गया, और एरिया इज नॉट द फाउंडेशन, राइट? एनीवन फ्रॉम एनीवेयर इज लिसनिंग टू हिम. Pratik, since coming of this internet, अब तो एरिया बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है. आप गांव में कहीं पे हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, go ahead and create reels. People are doing that, and people are reaching pinnacles in their own zone, और जिस भी फील्ड में वो है. एरिया बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है. Like you have immense opportunities there. Yeah. So end पे पहाड़ी वाणी, this is one of our initiative that to bring the artists from different areas, right? To put forward in a frame so that a large audience could large audience could know people from each and every place. तो इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ हमारे दर्शकों के बारे में what do you want to say? I'm so grateful for पहाड़ी वाणी. ये इनिशिएटिव इतना सही इनिशिएटिव है, प्रतीक. The moment you guys reached us to me, and I was like, यार कितने, like this was something that was missing. ये तो इन्होंने ऐसा किया है कि मेरे दिमाग में, और प्रतीक, I guess every artist के दिमाग में ये चीज जरूर होगी कि there should be a platform which brings up which contacts local rappers, singers, dancers, musicians, and उनको एक प्लेटफॉर्म दे. आप जो वर्क कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है आने वाले टाइम पे आप कितने लोगों को एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो वो these guys will be known to so many people out there. So it's all because of you guys. Shout out to Pahadi Vaani. Very awesome initiative, guys. I really loved it, and keep growing, guys. And I'll like any support from my end as well. I'm all there for you guys. Definitely. मैं प्रोग्राम को ऑलमोस्ट एंड मोमेंट पे हम ले आए हैं. जाते जाते मैं वो थ्रोबैक, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज स्कूल की जो यादें हैं, जो स्कूल की जो बातें हैं, तो मैं उस पर डूब जाता हूँ. तो मैं चाहूंगा मैं अपनी पसंद से एक मेरी ये जो क्वेरी है, तो थ्रोबैक सुन के ही मैं इस प्रोग्राम को एंड करना चाहूँ. तो प्लीज फ्रॉम मी पर्सनल रिक्वेस्ट, throwback. Yeah, sure. And I'm very much happy to do that. Throwback करने से पहले प्रतीक ने this is a song from my alma mater, from Pratik's alma mater as well. Mallikarjun school में हम लोग साथ में थे, and मैं जब lyrics लिख रहा था, and then I was like, मैं पुरानी यादों में खो गया. तो every time I used to, मैं जब every line I used to write, every word I used to, मेरे पास हमेशा दिमाग में वो स्कूल की alleys and स्कूल के playgrounds and basketball court and everything was that. तो मैंने वीडियो that benches, right? Yeah. Right. And so this one's to prominently to Pratik, and this one's to all our classmates out there. 11th, 12th mein, whosoever is listening to this, I really love you guys. You are really awesome. I had a very good time with very awesome, exciting time. I don't think I could get that time back. No one does, basically. But this one is for all you guys out there.
So shout out to 11th and 12th batch of mutual, like our 11th 12th batch. All right, here we go. So 1, 2, 3, start. Some words, few lines, a verse. Scribble back pages that's your worth. Backbenchers, the chits, way past conversations in the class with some lines in a verse. Waiting for the time, the clock strikes 5. Rappers all around and the place was a vibe. Jerseys there once, banana and chains, and the verse is already to lit up the place. And when I'm at the desk, rapping like a saint, I'm a fireball. The place is stunning mayhem, the music's fucking can. Shout out to DJ. Started up if I decline to stay up till 6 a.m. A choice with a goal and not a fucking chance. Not so good with numbers though, was at the top with rhymes. Rhyming was a passion, rapping was a prime. When your music's your passion, every moment's divine, yeah! We throw it Exactly. back, throw it back, throw it back, throw it back, yeah! तो Yeah, साहब बहुत अच्छा लगा ये जो मीट था. आई थिंक दिस वाज same here, bro. more than an Same here. interview. This was, I think, a get together for two people and all the people who are listening or who are seeing this interview, right? तो सर अब मैं इसी के Right. साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा इन फ्यूचर हम फिर से इस तरीके से मिलें और कुछ बेटर और कोलैबोरेट अगर हम करना चाहें तो हम करें. तो इसी के साथ मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू माय. Looking forward to that day. Really looking forward to that day to meet up and come up with something really good again. Thank you very much for this. Thank you for this opportunity again, Pahadi Vaani. Thank you, Pratik. Thank you to your complete team. I love you and goodbye, bro. Take care. ओके. तो आज के बेहद खास सुपर आर्टिस्ट गौरव हमारे साथ थे. इसी तरह हम लोकल और बेहद पसंदीदा लोगों के, बेहद खास, बेहद एक्साइटेड लोगों को अपने शो पे लाते रहेंगे. आप पहाड़ी वाणी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. फिर आपसे मुलाकात हो. तब तक के लिए